आपका यूनिट 1 और आज से मैं आपका ईटीपी का क्लास लूंगा। ईटीपी का इससे पहले यूनिट 1 क्लास मैडम ने लिया, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल, उसका यूजेस और एंटरप्रेन्योर क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने बताया होगा। आज हम आपको बताएंगे द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या रोल होते हैं और एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ये सारी चीजें जो है आई विल डिस्कस इन माय टुडेज क्लास। You are getting my voice or not? Please raise your hand. Anyone? Are you getting my voice? Okay. So today I will discuss the role of entrepreneur in in economic growth as an investor, yeah, innovator. Entrepreneurs plays a very vital role in economic growth of the country. एक entrepreneur का country के growth में बहुत बड़ा role है. Economic growth is the process by which the per capita income and total income of the country increases during a given period. Entrepreneur serves as the catalyst in the process of rapid industrialization and economic growth. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई एक एंटरप्रेन्योर ग्रोथ के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में कैसे वो भागीदारी है। When he establishes the industry in the country and in the state, definitely it is the main source of the growth of the nation. Understood? In the process of economic growth of a country, the entrepreneur play a motivator role. The process of economic growth cannot proceed onward without the active support of the entrepreneur. It is the entrepreneur who collect the natural, economic, human, technical resources of a country and exploit them in the economic growth of the country. Definitely, he is playing very fantastic role of the overall development of the country. An entrepreneur is more and true leader of the economic progress. He is by nature a visionary. He has innovative attitude. He loves risk-taking behavior. Without risk-taking, he will not become an entrepreneur, as we know that. He contributes to economic development in many ways, just like capital formation, technological breakthrough, innovative skill, market expansion, and organization of productive resources. Okay. And he searches for the market opportunities and takes the creative decision to exploit them. The major role of entrepreneur in economic development, we can say that the role of entrepreneur in economic development, one of the most important and basic role of an entrepreneur is to innovate. India would not have been discovered to Western world. Vasco da Gama would not have sailed to India. The natural resources of Africa would not have been exploited by Britishers. French would not have been virtued there. Most of the discoveries were not have been translated and implemented
if entrepreneurs were not willing to establish unit of setting up industries. The development of railways, telecommunication, agriculture, industry has been possible due to the innovation. Entrepreneur essentially means doing things are not generally done in ordinary course of the business. An entrepreneur discovers and develops new ideas, new product, new method of production, opening new market, new sources of supply of raw material, and new types of industry, new enterprises, new method of solving business problem, new organization, new combination, new opportunities. Innovation is the process of putting new ideas into action. The higher the rate of innovation, the higher will be the rate of economic growth. He is a catalyst. According to Easterbook, entrepreneur is an innovating giant who encourages production of new products in the industry, new techniques of the production, new machinery, use of new raw materials, use of new technology, and establishment of new industries. According to the Bark, entrepreneur is the true sense of greedy of new things. And according to the Peter F. Drucker, innovator is always in his search of changes and exploit it as when the opportunity arises. Innovation is the creative endeavor that creates wealth. Entrepreneurs develop new ideas from new ideas, and from their new ideas establish new enterprises that add value to the society. In fact, entrepreneurs create wealth by the creating something new or different, or by the searching of new opportunities as they arise to inspire a new venture. Indian entrepreneurs have set up those industries which had opportunity. There has been fast growth of food processing, petroleum, rubber, plastic, fertilizer, steel. Many sophisticated industries have also been set up, but most of the knowledge-based industry have not been innovated by the entrepreneur because of limited interest in research and development. They have based largely on with the foreign technical and financial collaboration. So student, as we know that the every country and every country's development is related to the entrepreneur. अब सवाल यहाँ पर उठता है कि who is called entrepreneur? एक entrepreneur कौन कहलाता है? Who is being called the entrepreneur? The person who is ready to take risk for the establishment of the enterprise, definitely he will be called the entrepreneur. एक शख्स, एक आदमी जो एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस और एक न्यू वेंचर इस्टेब्लिश करने का दमखम रखता है, उसको दमखम रखने के अलावा उसमें एक रिस्क सहने का एक ताकत है कि क्या होगा नहीं होगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा, एक रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है उसके अंदर, डेफिनेटली वही शख्स जो है वो एक इनोवेटर भी कहलाता है और एंटरप्रेन्योर भी कहलाता है. बिना एंटरप्रेन्योर के, है ना, बिना इनोवेटर के किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं. रतन टाटा है, धीरू भाई अंबानी है, मित्तल है, बाटा है. देयर आर लॉट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर हु कंट्रीब्यूट मेनी थिंग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट उसके एंटरप्रेन्योर पे भी निर्भर करता है, बिकॉज they generate so much employment to the unemployed people. वो लोग बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पीपल को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एंड दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, है ना, इन द टर्म्स ऑफ टैक्सेस, है ना, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कुछ होती हैं कंपनीज के,
जिसकी बदौलत एक कंट्री जो है डेवलपमेंट के कगार पे पहुंचता है। तो सिर्फ एक इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं होता है कि उसको अपना पैसा कमाना है। डेफिनेटली for their effort and for their arrangement of material, men, labor, the places, the market, each and everything, they will contribute to the development progress of the nation. Okay. Next, इसका रोल है द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि भाई जितना भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशेस होगा उसको उसके लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी, कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो लोग क्या करेंगे? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट entrepreneur generates employment not only for the himself but the members of his family but also the others who work with him. However, the number will depend upon the size and the requirement of the enterprise. Indirectly, by setting up large, medium, and small scale sized business unit, they offer job to the millions. For example, if 100% become entrepreneurs, they not only create 100 jobs but themselves, but also provide the employment to an army of unemployed youth. As the time passes, these entrepreneurs grow, providing direct and indirect employment. Thus, entrepreneurship is the best way to fight the evil of unemployment and generate new employment opportunities in the country. एक नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर एजेंसी है जो कि क्या करती है कि एक रेंडरिंग असिस्टिंग टू द यंग एंटरप्रेन्योर इन कोलैबोरेशन विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स in the country. It helps in identifying potential projects, conducting project feasibility report, and providing financial assistance and other logistic support to the young entrepreneur. है ना? एक क्या है, यहाँ बनाया गया था नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर NAYE जिसको शॉर्ट फॉर्म है। वो उसमें क्या होता है कि एक यंग एंटरप्रेन्योर जिसके अंदर एक जोखिम लेने का मादा है, वो एक इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है एक इंडस्ट्री का, बस उसको एक सपोर्ट की जरूरत है। तो उसके लिए एक ये बनाया गया जिसमें उसका पोटेंशियल प्रोजेक्ट, conducting project feasibility report, providing financial assistance, each and everything will be provided to them for establishing the enterprise. तीसरा रोल जो अहम रोल है एक एंटरप्रेन्योर का, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन कंप्लीमेंटिंग एंड सप्लीमेंटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। In recent decades, the role of an entrepreneur has been to supplement and accelerate the pace of growth and economic development in both the developed and developing countries. When an entrepreneur set up an industry or service unit, it helps in the economic growth. Similarly, when economic grows, it creates opportunity for further growth. Therefore, every economic growth has a multiplier effect. One complement the other and one supplement the other. When an entrepreneur establishes a bank, it complements other economic activities and it helps further growth. When any engineering and electronic unit is set up, it the required component from a large number of manufacturers. It most engineering electric industries like TV, refrigerator, computer growth. One of the large unit gives birth to a number of ancillary unit. This is a true not only for the engineering and electronic industry, but also for the steel, textile, chemical, food, processing, and so on, so on. Along with the complementary development, there is also complementary and supplementary development. When a spinning
Mill is set up the lead development of thread unit, the cloth weaving unit. When a computer hardware industry is developed, it leads to the growth of software industry. The development of software industry led to its export from India in a big way. Therefore, one leads to the growth of another activities, है ना? जैसा कि तीसरा रोल जो अहम रोल है वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. हर एक एक दूसरे का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट होता है. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक एंटरप्रेन्योर की वजह से इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशेस होता है. इंडस्ट्री हो रहा तो लेबर का जरूरत पड़ रहा है, मटेरियल का जरूरत पड़ रहा है, आदमी की जरूरत पड़ रही है, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है, मार्केट है, ये है. तो वो बहुत सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं जिससे डेवलपमेंट होना ही होना है ना. नेक्स्ट है कि भाई फोर्थ रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज ब्रिंगिंग अबाउट द सोशल स्टेबिलिटी. Economic power denotes the power and wealth owned by the an individual. Economic power is the natural result of the business activities. Establishment of large enterprises lead to concentrate of economic power in a few hand in the society. Such concentration has its own evils in the form of monopolies and monopolistic exploitation of the consumer and the society as a whole. Hence, developing a large number of small entrepreneurs help in even the distribution of economic power in a wider range, ultimately bringing about the social stability. Entrepreneurs bring such stability also by generating self-employment, facilitating development of rural and backward areas. Generally, entrepreneurship is taken to be the synonym with the small scale industries or enterprises. Entrepreneurs have a definite social role and responsibility towards the society. They must act in the way of essence of community well-being, socially responsible behavior of an entrepreneur not only helps the consumer and company, but it also ensures the social stability and order. जैसे मैंने कहा कि अगर एक कंपनी ओपन है, they must be fulfill the requirement of CSR, which is means the corporate social responsibilities. एक इंडस्ट्री का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट को बेच दिया मार्केट में, नहीं. इसके साथ साथ उसको कुछ समाज का भी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है ना. दे मस्ट फेस द चैनल ऑफ द CSR, द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनके कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं जिसको हम लोग बिजनेस एथिक्स भी बोलते हैं, है ना. The next role of the entrepreneur will be the balanced regional development of the industries. Industries development as a tendency to establish and develop industries, big or small, in metropolitan cities like Delhi, Mumbai, Chennai, or Kolkata. This brings to unbalanced regional development of industries. In this context, also entrepreneurs are required to play an important role in balanced regional development. They set up industry, particularly in backward areas, to avail the various concessions and subsidies offered by the central and state government. The government of India, the state government are also trying to disperse the industries by establishing industrial estates and creating infrastructure facilities in backward areas. जैसा कि हम जानते हैं कि कि एंटरप्रेन्योर से सिर्फ ये नहीं होता है कि वो एक डेवलप्ड ही जगह पे अपना इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करे, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इवन इन द
from the state government, they provide them some क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, अ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है गवर्नमेंट की, भाई आपको हम कुछ सब्सिडीज दे देंगे, कुछ कंसेशन दे देंगे, आप ऐसा करो कि आप रूरल एरिया में एक इंडस्ट्री को सेटअप करो, ताकि वहां के लोगों को भी उद्धार हो जाए, वहां के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो एरिया भी डेवलप्ड हो सके। तो क्या है, इससे क्या होता है, द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज नॉट ओनली फॉर द metropolitan city like Mumbai, Chennai, Kolkata, है ना? Even after the backward area will also be the uplifted by the role of entrepreneur. और क्या रोल हो सकता है? The role of entrepreneur in export promotion and import substitution. अब entrepreneur से जो है ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी काम हो सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन रेफर्स टू द policy of the government designed to encourage the exports to export more goods from the country than before. An entrepreneur, being an industrialist, has a major role to play in export promotion. Export promotion reduces unfavorable balance of the trade, decreases import and increase imports, exports. It also increases valuable foreign currency reserves. Various facilities, incentives, and subsidies are provided by the central government and state government in the field of export promotion. Increasing number of entrepreneurs, both old and new, are taking benefit of incentives, concessions, and subsidies offered by the government. Entrepreneur establishes unit for the meeting domestic and export demand of goods and services. He also looked opportunities for export promotion of surplus goods and services. He can export to international market. For promoting export, an entrepreneur has to take many decisions, have the implement them in the short and play some role. This role will be exploring export promotion possibilities, decision regarding entry in international market of for export, creation of demand in international market, decision regarding pricing and costing, decision regarding distribution or middleman, promotional decisions, availing of export promotion scheme, and getting institutional support. So these five main or six main role of an entrepreneur. I repeat once again, one by one. The main role of entrepreneur for the development of the country is the role of entrepreneur in economic development, generation of employment opportunities, role of entrepreneur in complementing and supplementing the economic growth, the bringing about the social stability, balanced regional development of industries, है ना? And the last one is the role of entrepreneur in export promotion and import substitution. So these six main role of entrepreneur. So in the summary of today's lecture, I have already discussed about the who is called entrepreneur. The entrepreneur वो है the person who is bearing the risk taking capacity for the establishment of industry, है ना? एक ऐसा शख्स जो रिस्क लेकर एक इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने का दमखम रखता है, उसको हम लोग इनोवेटर भी बोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं। इनोवेटर इन द सेंस ऑफ, वो इनोवेटर मीन्स इनोवेट समथिंग न्यू, कुछ नया चीज का इनोवेशन करना, ठीक है?
तो फिर एक एक एंटरप्रेन्योर कंट्री के डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी है, क्या रोल है उसका? डेफिनेटली व्हेन ही एस्टैब्लिशेस द इंडस्ट्री इन द कंट्री, है ना, और द नेशन, definitely he will provide some employment opportunities to the unemployed people, है ना। उसके वजह से बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट को मिलेंगी। गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई ऐसा है कि बैलेंस बना के चले, सिर्फ इंडस्ट्री जो है हमारे शहरों में ना हो, बल्कि उसको एक ऑफर देता है कि हम आपको कंसेशन दे देंगे, हम आपको सब्सिडीज दे देंगे, हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी करेंगे, आप ऐसा करो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए हम लोग चाहते हैं कि वहां भी इंडस्ट्री हो, तो उन लोग वहां भी इस्टेब्लिश करके एक नया शहर, एक नया गांव को शहर में बदल देता है, वहां के लोगों के लिए उद्धार हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि कम इस कंपनी से, इस इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने की वजह से हमारे कंट्री का, हमारे देश का, हमारे नेशंस का ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। यही मेन मकसद है। तो आज के लिए आज इतना ही रखते हैं। आज टुडे इज माय फर्स्ट क्लास रिगार्डिंग द ईटीपी या ईटीपी। हम लोग नेक्स्ट कल क्लास करेंगे और एक पावर पॉइंट की तरह हम आपको एक नया चैप्टर के हिसाब से बताएंगे। तो आवाज आ रही है सबको मेरी? नाउ यू कैन ऑल लीव। आवाज क्लियर थी ना? रेज हैंड करके खाली बता दीजिए आवाज मेरी क्लियर थी कि नहीं। वीडियो की जरूरत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। अगर वीडियो की जरूरत होगी तो वीडियो भी कल से, और कल से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और अपने बोर्ड से भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। ठीक है, लीव कर जाइए।